हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टोरी द लॉयन एंड द माउस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। Once there lived a lion in the dense forests. One day it was sleeping comfortably in his den. Meanwhile, a mouse went there and disturbed the lion. He cut the mouse and wanted to kill. The mouse was very much frightened and begged for the mercy. The lion did not offer mercy. The mouse requested the lion several times to let him free. He also promised the lion to help in the future. Then he let the mouse free. After some days, the lion was trapped in a net and could not even move. He was a great problem. The mouse saw that the lion was going to be killed by a hunter. The mouse cut the net and the lion was easily freed. He thanked the mouse. Moral: a friend in need is a friend indeed. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।